जी गुड आफ्टरनून. स्टार्ट करते हैं विद मेंस. Initially we would be doing simple topics from society, and that would be with the passage of time very soon clubbed with world history, और साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री बीच में जो भी सोसाइटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दैट वुड बी कवर्ड, और वर्ल्ड हिस्ट्री वुड बी कवर्ड. अलॉन्ग विद वर्ल्ड हिस्ट्री सम टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस दे वुड बी स्टार्टेड. तो इनिशियल फेज में ये करेंगे. जैसे एक वन थिंग इज बीइंग फिनिश्ड, along with that ethics would be started and ethics class would be continuing. This is the way the pattern of the classes would be going on. Today the first topic, that is the easiest topic that we would be doing, is salient features of Indian society. Second, what are the problems faced by Indian society and how they can be overcome? These are the topics which would be dealt comprehensively today. Firstly, or agar if time permits, the second topic that would be taken up would be communalism. What is communalism? What are its features? What are the factors which are responsible for communalism? What are the steps that have been taken by the government to overcome the problems? What government schemes have been started? What is the state of communalism that is growing on in the country in the 21st century in the context of rising communal incidences? These are the two important topics that we would be taking up. First is salient features of society. हाँ जी बताओ क्या है? बहुत बार बता चुके हैं तो आज डिक्टेशन का. What are the salient features of society? Hierarchical in nature, caste and creed. अरे one by one. Hierarchical in nature. Unity in diversity, or Patriarchy. caste is being dominated, or Kinship. कौन सा? Kinship, purity or pollution. और cultural diversity, or religious and धार्मिक movement, और agricultural society, और patriarchal हो गया. Any other thing that you can tell that these are certain features of Indian society? Economic differences, गरीब है अमीर है, और कुछ रीजनल, इसी में याद करो अलग से लिख दो. रीजनल डिस्पैरिटी, what is डाइवर्स सोसाइटी है हमारी. यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक ही बात है. मल्टीलिंगुअल है. डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और है मल्टी एथनिक, वही हो गया. चलो और कुछ इवॉल्विंग सोसाइटी, और कुछ अर्बन है, रूरल है, ठीक है. These are the features which are there of Indian society. आपको सबको पता है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सब लोग 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बता रहे हो. This is what has been given in the NCERT book, but that will not fetch you marks. All features are correct,
But all features will not be fetching you marks because many features are there which are clubbed with each other. There are various chances, there are chances that he may ask you what are the salient features of Indian society in the 21st century. Elaborate, examine, analyze with the help of various examples. This is not a question that would be coming feature तो बता दो और बात खत्म, ये बात नहीं होने वाली. The question can be there that इसको आप अलग अलग examples के साथ बताओ कि हम किस तरीके से हैं. We'll cover it one by one. All the features would be comprehensively dealt with. ठीक है, पहले समझ लो. After explanation, I would be dictating all those things. For example, the is plural in nature. We are a society which is plural. Plural क्या होता है? Many, more than two. Plural society does not mean कि हम pluralism can be in any context. It can be in the context of politics. It can be in the context of society. It can be in the context of economy. It can be in the context of religion also. It can also be in the context of technological developments that are taking place in the country. When you are writing about pluralism, that a country is plural does not only mean that multiple different peoples of different caste creeds are living XYZ. That is just one aspect of the whole question that will give you just one point. When you say that the society is plural, the economy is plural. When we talk that society is plural, what does that mean? That Hindus, Muslims and others, they are living with each other. How can you say that they are living with each other? That can be seen from the context of pluralism, that a plural feature is even seen in a particular house also. For example, there are intercaste marriages are there. Intercaste marriages हो रहे हैं. For example, there is a Hindu and Muslim marriage, Hindu and a Sikh marriage, or XYZ any other marriages there. क्या एक ही घर में अलग अलग भगवान को नहीं माना जा रहा? That is called pluralism in the society. And pluralism in the society starts from the diversity that exists within the house itself. Not only that, for example, कभी कभी देखते हैं कि बच्चा अपने माँ बाप के रिलीजन को छोड़ किसी और रिलीजन को बिलीव कर रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जोधा अकबर मूवी आई थी. Was she not worshipping Lord Krishna? She was. What I'm trying to say is there is a diversity even in the house, and when you see a broader house, the society is your house. The same can be seen in the context of this also. Then economics also. Economically also we are a plural. Means there are diverse ways of carrying out certain occupations. There can be a certain sector in which the government is having control, public industry. क्या public sector enterprises नहीं है हमारी country में? There are certain areas क्या where the private sector is allowed 100% investment. Not only private sector is allowed 100% investment, but there are certain areas in which even 100% FDI is also allowed. हमारा अपने लोग ही नहीं, क्या बाहर वाले लोगों को भी हम अपने असिमिलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे? We are trying to do it. And there are certain areas in which public-private partnership is going on. हमारी इकोनॉमी भी एक प्लूरल की तरह से बिहेव कर रही है. And that can be seen from the context of, for example, PSUs are there, public sector enterprises are there. Are the people of public enterprises coming from just one religion or one caste or one creed? नहीं, उसमें कोई भी हो सकता है. There can be, for example, a private can be there. For example, Tatas are there. क्या Tatas की फैक्ट्री में सिर्फ पारसी काम कर रहे हैं? नहीं, it's not happening. There are certain people who are there from within the country and some are from abroad also. Some are Parsis, some are Hindus and some are from other castes. What I'm trying to say is, while different economic features are covering, the topic is features of Indian society. तो इसको economy को भी हमने इस तरीके से लिखना है ताकि society में club हो जाए. The third is, for example, the political structure. We are politically also plural. For example, there are different parliamentarians that are there. The parliamentarians, they come from different religion.
they come from different region, they come from different caste, they come from different creed. इसी में हमें प्लूरलिटी है हमारे पार्लियामेंट में. क्यों? बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेटिंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसकी वजह से हमारी पार्लियामेंट भी हमारा प्लूरल फीचर बन चुका है. देन देयर आर सर्टेन फीचर, फॉर एग्जांपल बोथ मेल्स एंड फीमेल आर रिप्रेजेंटिंग द पार्लियामेंट. क्या ये प्लूरलिज्म नहीं है? अलग अलग लोग हैं वहां पे. फॉर एग्जांपल, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर आर हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन एंड अदर पीपल आर देयर इन द कंट्री, क्या मनमोहन सिंह अ पर्सन फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या हमारे प्रधानमंत्री नहीं बने? अब्दुल कलाम अ पर्सन फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या हमारे प्रेसिडेंट नहीं बने? या विमेन फॉर एग्जांपल क्या इंदिरा गांधी क्या हमारी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी? Despite the fact that people, we are a diverse society, we are a plural while we take into consideration our parliament or our, for example, political structure also. Next, while we are also religious, in religion also we are also plural. For example, there are gurdwaras. I think most of people visit the gurdwaras. और जो सिख्स है वो मंदिर से भी जाते हैं. You go to Golden Temple, people would be Muslims, they would be worshipping and praying over there also. किसी की दरगाह है वहां पे भी सब लोग जाते हैं. There are different religion and none of the people are, for majority of people, they are secular in the sense that they are open to visit the places, the religious places of different religions also. Therefore, from the religious point of view, religious plurality का मतलब ये नहीं होता कि अलग अलग धर्म प्रिवेल कर रहे हैं. रिलीजियस प्लूरलिज्म हमने देखना है सोसाइटी के कंटेक्स्ट में कि प्लूरलिज्म तो है लेकिन किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाय द वे दैट एवरीवन इज विजिटिंग द डिफरेंट प्लेसेस आल्सो. फॉर एग्जांपल, सिखिज्म में लंगर सिस्टम प्रिवेल करता है. When every people go, despite the fact that we belong to different caste, creed, etc., every people they sit on the floor and then have their food. What is the meaning says that despite the fact that different people are coming to eat food over there, langar over there, everyone is being treated equal. While we are progressing, while we are making technological developments, we are plural. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई और अब हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्लूरल किस तरीके से हो रहा है और सोसाइटी के कंटेक्स्ट में किस तरीके से फेवर हो रहा है. फॉर एग्जांपल, वेरियस कीपैड्स आर कमिंग. क्या कीपैड्स सिर्फ इंग्लिश में आ रहे हैं? कीपैड्स आर आल्सो कमिंग इन हिंदी, कीपैड्स आर कमिंग इन पंजाबी, कीपैड्स आर कमिंग इन उर्दू एंड वेरियस अदर लैंग्वेजेस. There are various apps which are coming, for example, for Gita, apps which are coming for Guru Granth Sahib, apps which are coming for Quran and other religious literature. And this is the area where the society is getting positively affected. So while we are religiously plural, technically plural, this technology is playing a better role in making the society a better place where diverse people can live together. पहला पॉइंट क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम? इसको आपने हर पॉइंट को लिखना है सोसाइटी कंटेक्स्ट में. वी आर अ प्लूरल सोसाइटी डज नॉट मीन कि हम अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं. दैट्स ऑल. दिस पॉइंट राइटिंग इन सिंपल टर्म्स विल नॉट फेच यू मार्क्स. आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, देन ओनली द मार्क्स वुड बी देयर. पहला पॉइंट क्लियर हुआ? कोई डाउट? सेकेंड पॉइंट, वी आर एन एथनिक सोसाइटी. What is ethnic? Different culture. थोड़ा फैन चला दिया. Different cultures are prevailing. Different culture does not mean कि different अलग अलग भगवान को मानते हैं, अलग अलग cultures है, अलग अलग. What by ethnic societies? There are diverse ways in which people live their life. There are diverse ways in which people they celebrate their festivals. There are diverse food that are there in the country. There are diverse clothing that are there in the country. There are diverse traditions that are there in the country. There are diverse festivals that are there in the country. So this is ethnicity. For example, the best example that can be given is, for example, the Republic Day or the Independence Day, 15 August, 26 January ko, all diversity, all ethnicity can be seen at one platform. This is one thing you can write. Second way of writing an ethnicity is, for example, different ways of food and etc. are there.
any person from northern India part of the country, when he or she goes to Kerala or for example Tamil Nadu, वहाँ से definitely कांचीपुरम की साड़ी या किसी और साड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं. You go to for example जम्मू एंड कश्मीर, आप वहाँ का उस तरीके से पहरावा खरीदने की कोशिश करते हैं. You go to Tamil Nadu या for example you go to Kerala, क्या वहाँ पे उनका डोसा नहीं खाते? You go to Maharashtra, क्या आप कोशिश नहीं करोगे कोल्हापुर की चप्पल लाई जाए? Definitely. This is ethnicity. Means we are open to the acceptance of different things from where we are visiting. हम अगर वहां पे बाई चांस कोई रिलीजियस फेस्टिवल भी हो रहा है और हम रिलीजियस टूर पे जा रहे हैं, किसी टूर पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी ट्राई की करें कि उस रिलीजियस टूर पे फॉर एग्जांपल कोई फेस्टिवल हो रहा है, हम भी देखें किस तरीके से वो फेस्टिवल हो रहा है. वेदर यू बिलीव इन दैट और यू डू नॉट बिलीव इन दैट इज डिफरेंट. कम से कम उसको देख तो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हैदराबादी बिरयानी मिलती है, अच्छी लगे ना बुरी लगे, एटलीस्ट यू विल ट्राई इट वंस. कि यार हैदराबादी बिरयानी बड़ी मशहूर है, लेट्स ट्राई इट, लेट्स गो फॉर वंस. फॉर एग्जाम्पल पंजाब में पटियाला शाही सलवार, एवरी गर्ल्स ट्राई टू वेयर इट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डिफरेंट थिंग्स दैट आर प्रिवेलिंग इन द कंट्री एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू एक्सेप्ट दैट. In South India, for example, there is a habit of eating more of rice, and they eat rice basically by their hand. Or you go to Punjab or region, you go to this Haryana region, और आपके आगे कोई हाथ से खा रहा हो, आप नहीं खाना खा पाओगे, because you do not eat by hand. आपको चम्मच से खाने की आदत है. और उनको बोलो रोज रोटी खा लो, वो रोज रोटी नहीं खा पाएंगे और हम रोज चावल नहीं खा पाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारी एथनिसिटी डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल there is a friend of mine, when he came to Delhi, जम्मू कश्मीर से वो रोटी चाय में डुबा के खाते हैं, and that was something new to him कि रोटी सब्जी के साथ खाते हैं. और that was what was new to us was कि रोटी चाय में डुबो के खाते हैं. क्या फर्क? कहने का मतलब हुआ we are ethnicity, we are a diverse society, we are the way in which people are evolving, and all this ethnicity can be seen in the context of different food, different clothing, different religious festivals, and we try to assimilate all the religious festivals in the area where we are living. Ethnicity, and this ethnicity influences the way in the way we are living at different places. For example, there can be a person, there can be a Muslim girl in Jammu and Kashmir, and she would be wearing a burqa. The Muslim girl, for example, in UP and Bihar, she would be wearing a sari. The Muslim girl in South India, she may be wearing a denim. Kyun? Because the factors, the culture, the area, the ethnicity, the people with which you are living changes the ethnicity, influences the area, influences the way we are living. कोई problem? And all these things can be seen in 15th August or 26 January की Republican Parade. सेकेंड पॉइंट में भी प्रॉब्लम. अगर आपने एथनिसिटी में लिख दिया हमारा अलग अलग फूड है, ये है, वो XYZ है, कुछ नहीं मिलने वाला मार्क्स में. Be it very clear, means is not, you are not appearing for a clerical exam. आपको एक IAS की तरह ही उसके हिसाब से बात करनी पड़ेगी. सेकंड में कोई प्रॉब्लम है पॉइंट में? रिपीट करना कुछ. Thirdly, we are a multicultural society. Third. Sir, Yes. what are the factors responsible for the development of the ethnicity? For the development of Ethnicity. कोई भी culture develop करके क्या reason? culture is the development of culture is not an event. The development of culture is a process. For example, जैसे जैसे अलग अलग लोग इंडिया में आते गए, Aryans they came, the Turks they came, the Mughals they came, the Britishers they came. जैसे जैसे आते गए वो कल्चर वहाँ का डेवलप होता गया. हर एक के फीचर्स हम असिमुलेट करते गए. मल्टीकल्चरल सोसाइटी. व्हाट इज मल्टीकल्चरल सोसाइटी? Different cultures are prevailing. For example, लोहड़ी is there in Punjab. क्या लोग उसको फॉर एग्जाम्पल यूपी में सेलिब्रेट नहीं करते? करते हैं. होली हर जगह पे सेलिब्रेट की जाती है. या फॉर एग्जाम्पल एक पतंग उड़ाने वाला फेस्टिवल बसंत पंचमी, यहाँ पे 15 अगस्त को मनाया जाता है, पंजाब में और दिन मनाया जाता है. बसंत पंचमी होती है वहाँ पे, यहाँ पे बसंत पंचमी कुछ होती नहीं है. So what I'm trying to say is there are different cultures that are prevailing in the country. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे कौन सेवियाँ कब बनती है तुम्हारे? ईद पे सेवियाँ बनती है ना, बड़ी टेस्टी सेवियाँ बनती है. मेरा मुस्लिम फ्रेंड्स है, मैं उसको डेफिनेटली बोलता हूँ उस दिन मेरे को जरूर बुलाना. ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल, ऐसी भी दो चीज़ है.
फर्स्टली एक अच्छा लगता है दूसरे रिलीजन के बारे में जानना, और दूसरा अच्छा खाने को भी मिल जाता है. टू थिंग्स आर देयर. What I'm trying to say is that the multicultural society, we try to assimilate different cultures. जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, काफी अच्छा फ्रेंड है, ही इज अ हिंदू. व्हेन माय वेडिंग वाज देयर, बोलता है यार मेरे को भी पगड़ी डालनी है, मेरे को पगड़ी बनवा दो. ठीक है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिंग आर देयर. क्या फॉर एग्जाम्पल दिस पठानी सूट होते हैं, द गाइज दे वेयर इट, अल्टीमेटली तो वो सलवार ही होती है. This is what different cultures are there, and different culture they prevail the way in which you are doing. अब जब इस कल्चर को सोसाइटी के कंटेक्स्ट में लिखना है, while various religious festivals are going on, while you people are enjoying, the people who are being posted into police services, or while those people who are posted into army, they are taking care of your protection. क्या कभी आर्मी ऑफिसर हो या कभी पुलिस ऑफिसर हो, क्या लोहड़ी दिवाली अलग अलग फेस्टिवल अपने बच्चों के साथ मनाता है? वो नहीं. दिस इज अवर सोसाइटी. The society is, while we are a cultural diverse society, if there are certain threats that to coming to that cultural diversity, there are always certain people who would be trying to preserve this cultural diversity while we are trying to accept the features of different. Not only this, but this cultural diversity can also be seen in the context of various colors that are popular in the country. For example, yellow color is popular in south part of the country. The red color is very popular in, for example, in the eastern part of the country. अलग अलग एरियाज का अलग अलग कल्चर है जो उसके वहाँ के अलग अलग कलर्स को भी डिफाइन करता है. The fourth point is multi-religious. We are a multi-religious society. That does not only mean कि हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, these religions are there. Multi-religious society means while the Hindus that are in the country are in majority, even the minorities are comparatively safe. चाहे majority country में हिंदूज है, लेकिन minorities भी safe है. क्यों? Because every person in the country is having a feeling or a sense of belongingness to the nation as a whole. इस फीलिंग में है. फॉर एग्जाम्पल दिस मल्टी रिलीजियस कैन बी सीन वाइल इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑल्सो, वाइल इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोसाइटी ऑल्सो. बहुत बार क्या होता है कि मुस्लिम बॉय फॉर गोइंग फॉर अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन इज बीइंग ड्रेस्ड एज लॉर्ड कृष्णा. बहुत बार बना होता है. अब मुस्लिम गर्ल 2 साल पहले शी टॉप्ड इन गीता. दिस इज द एग्जांपल्स दैट यू कैन. मल्टी रिलीजियस सोसाइटी डज नॉट मीन कि अलग अलग वहां पे रहते हैं. और इवन द सिंगर्स दैट आर देयर, मोहम्मद रफी, क्या वो भजन नहीं गाते थे? देयर इज अनदर पंजाबी सिंगर फॉर एग्जांपल लखा, क्या वो माता के भजन नहीं गाता? So this is what I'm saying. While different religions are there, every different religion is learning from one part or the another part. And this religion is also influencing the society. For example, when Islam का invasion हुआ, तो क्या यहाँ पे Sufism ने influence नहीं किया Bhaktism को rise होने में? Definitely it did. And therefore the cultural society that emerged, जो अभी language, जो हिंदी language है, पंजाबी language है, या जो भी ब्रज भाषा है, Is it not that we use different words? हम बहुत बार एक दूसरे लैंग्वेज के वर्ड यूज करने लग जाते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट वी डू नॉट इवन नो कि उसका अरेबिक ओरिजिन है, पर्शियन ओरिजिन है, पंजाबी ओरिजिन है, हिंदी ओरिजिन है, संस्कृत ओरिजिन है. कैसे अलग अलग में इकट्ठे यूज करने लग गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मल्टी रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस दैट आर देयर दैट कैन बी सीन ओवर हियर. कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट इज पैट्रियार्कल सोसाइटी. क्या होता है? मेल डोमिनेशन. और कुछ? पैट्रियार्कल सोसाइटी डज नॉट मीन कि सिर्फ वहां के मेल की ज्यादा जलती है, फीमेल्स की नहीं जलती. दिस इज पैट्रियार्की, नॉट पैट्रियार्कल सोसाइटी. व्हाट पैट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स, उस चलती का इन्फ्लुएंस कहां पे देखने को मिल रहा है? इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है द इफेक्ट ऑन चाइल्ड सेक्स रेशियो दैट कैन बी देयर. कुछ स्टेट्स जहाँ पे प्रेडोमिनेंटली मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा, इस रीजन्स में वहाँ पे सेक्स रेशियो की प्रॉब्लम है. और जहाँ पे एजुकेशन बढ़ चुकी है, गो टू फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप, गो टू फॉर एग्जांपल पौंडीचेरी, गो टू फॉर एग्जांपल केरला, तमिलनाडु, वहाँ पे कंपेरेटिवली फेवरेबल सेक्स रेशियो है. Despite the fact that ये इंडियन कंडीशन है, despite the fact that there is a dominance or predominance of patriarchal society around the world also,
लेकिन मेजॉरिटी में डेवलप्ड कंट्रीज में देखोगे तो फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मेल, लेकिन सर्टन फैक्टर्स दे आर इन्फ्लुएंसिंग जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है. Another thing that can be seen is, for example, if mother and father both are into their occupation, माँ भी जॉब कर रही है and father is also working. When mother she comes from the office, hardly the student उनके बच्चों के ऊपर कोई फर्क पड़ता है. लेकिन जैसे ही कोई फादर अपने घर पे वापस आने वाला जॉब करके, सब बच्चे अपनी अपनी किताबें उठा देते कहीं डांट ना पड़ जाए. दिस इज पेट्रियार्कल सोसाइटी. मेरे को याद है, मेरा दोस्त था, उसके दादाजी ही वॉज वेरी ओल्ड, ही वॉज अनएबल टू स्पीक ऑल्सो प्रॉपरली, उसके दादाजी. लेकिन जैसे ही शाम को 5:30 होते थे, सब घर की फीमेल्स टीवी भी बंद करके अपना खाना लग जाती थी, XYZ स्टार्ट करना, और पूरे बच्चे सब गेम छोड़ के चाहे 5:25 में ही लगे, लेकिन बाई 5:25 दे वर रेडी ऑन देयर टेबल, और फीमेल्स पूरी किचन में चली जाती थी. ऐसा नहीं कि वो आके उनको मारने लग जाएंगे. द थिंग वॉज दैट द डोमिनेंस दैट इज बीइंग प्रिवेल्ड ओवर हियर, और ये डोमिनेंस आपको हर जगह पे देखने को मिल जाता है. Next thing that can be seen is another factor that can be influencing is agricultural society. We are agricultural society. Agricultural society means majority of the people, be it the male or be it the female, is directly or indirectly in one or the other way involved into agricultural activities, agriculture or allied activities. That is one thing. And the various reasons are associated with it. For example, हमारा predominantly agriculture रहा है. The government has not been taken many steps to educate the people XYZ. वो लिखने की जरूरत नहीं है. Agriculture society means for most of the population, it can be said that people are engaged into agriculture or other activities. Then we are a participative society. Participative society means two different things are there. Participative democracy and representative democracy. These features can be seen in the context of participative society. We were already a participative democracy. The women and the males, both of them, they were participating in the elections from 1947. But the representation of the women were comparatively less. To increase the representation of the women, to make the society, the economic, the polity more and more participative, what we did was the government passed 73rd and 74th Amendment Act. And Q, so that the representative democracy can be made, and we could very easily move from participative democracy to representative democracy. The problem. Next is we are a secular society. समझाने की जरूरत नहीं है. Itself says कि अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, prevail कर रहे हैं, and people they respect almost every religion. There are certain people at various assemblies are being held, various religious convocations are being held, in which the heads of various religion they come together and participate in the decision making. They come together to understand, to make it know what steps can be taken to overcome the problems that are prevailing in the society. Kyun? Because every essence has a religion attached to it. And that can be seen in the context of, for example, the decision that was taken for triple talaq. 5 अलग धर्म से लोग थे जो जब जजेस आए थे. क्यों? Because we want to say that we are a secular society. Then we are a united society. What is united society? Despite the fact that there exists diversity, there exist religious or any other differences that are there, but if there is any threat to the society, if there is any threat to the nation, the people they come together to contribute for the nation. जब 1965 की वॉर लगी थी तो ग्रैंड पेरेंट्स बताते थे, द आर्मी वाले जब भी लोग आते थे वहाँ पे फॉर टेकिंग द डोनेशंस फ्रॉम द पीपल, लोग अपने गोल्ड के ज्वेलरी उतार के उनको दे देते थे. क्यों? सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशंस. अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं. क्यों? बिकॉज वी आर अ यूनाइटेड सोसाइटी. हमें पता है कि अगर एक बैटल हारी, इट इज नॉट ओनली कि उस बॉर्डर पे हार गए,
पूरे के पूरे देश को खतरा हो जाएगा. Even the constitution also of the country says that India is a union of states with indestructible nature and character. Union of states है हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि कल इसको छोड़ के बाहर निकल जाएगा. Then we are a unskilled and a semi-skilled society. Unskilled. Because what happens is usually we go for specialization only after the 12th class. 12th के बाद ही आप डिसीजन लोगे ना, मेडिकल में जाओगे, नॉन मेडिकल में जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे, ये करोगे, वो करोगे. And that is what is, or on the other hand, the problem is majority of the children they drop after the 10th class or the 12th class. But on the other case, in the countries, for example, Japan, Korea, or China, it can be this specialized or technical education is given to the students while they are there in the 6th, 7th, or 8th class. Reason being, चाहे बच्चा 10th के बाद स्कूल में हट जाए, he or she should be in a position to have some sort of self-employment or any other things. But on the other hand, we are a semi-skilled, unskilled society can be seen in the context of, for example, the government launching National Skill Development Council or skill development programs. For example, Skilling India and other India programs are being launched in the country. Kyun? Because we want to take the benefits of demographic dividend that is there in the country. The problem. Another point can be, we are a caste-driven society. Caste-driven society. For example, caste-driven society क्या होता है? One aspect. Or caste-driven society means there are caste in almost every religions. अगर हिंदुइज्म के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू एंड फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम इस्लाम एंड सिखिज्म, अगर इनकी बात करें, कंपैरेटिवली द फाउंडर सेज दैट कि एवरीवन हैज टू बी ट्रीटेड इक्वल. लेकिन क्या आज इनको इक्वलिटी में देखा जा रहा है? नहीं. फॉर एग्जाम्पल इन सिखिज्म ऑल्सो कुछ अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, कुछ अपने दूसरों को इन्फीरियर मानते हैं. एंड सेम इज द केस इन ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन. दैट इज वी से दैट इट इज अ कास्ट ड्रिवन सोसाइटी. हर धर्म में लोग कास्ट में डिवाइड किए हुए हैं. First point. Second point can be seen whenever we try to mobilize the people. What we say is हमारी कास्ट, हमारी जात वाले लोगों को खतरा हो रहा है, हमारी कास्ट, हमारी जात वाले लोगों के लिए रिजर्वेशन चाहिए. It gives an agenda for the people, for the various leaders to mobilize the people, mobilize the community on the basis of caste and various other things. This reflects that we are a caste-driven society. बहुत इतने, इसी तरह तो लिखा ही नहीं जाएगा पेपर में.